Good afternoon, everyone. Back again with your phrasal verbs. And today I'll tell you why these phrasal verbs are important and you need to learn them. Three basic reasons are there why you need to learn it and use it. The first is because phrasal verbs are common in all types of English, either formal or informal. It just makes you feel good talking it. Secondly, phrasal verbs help you to move up the level. You move up in your speaking, you're upgrading yourself. So when you use phrasal verbs yourself, your English will sound more natural. Instead of using formal verbs, you can use a phrasal verb that sounds right in normal situations. And third, phrasal verbs add greater interest and meaning. Something that we don't often mention is that phrasal verbs add interest to English. They can help you create images in someone's mind. So let's get ahead. The more, the better. So if you want to speak good English, get ahead with some good vocabulary, idioms and phrases and phrasal verbs. In the last lesson, we talked about the verb take. There are a lot of phrases with the word take. So we did 12 in the last video lesson. Today we are taking up again some useful words, phrasal verbs, which can really help you to speak. Nothing is impossible, nothing is difficult if you try. कोशिश करेंगे तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती है. And language, please remember, English is not our language, but we are speaking English. Why? Because we are speaking all the time. So if you make it a habit, you will be just as good. So never shy away. कभी ये मत समझिएगा कि हमसे नहीं होने वाला, या अभी तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है. So let us get started with phrasal verbs on take part 2. Number 13 is to take part in, to participate. You take part in a lot of activities at home, in school, in colleges. You take part in speeches, you take part in some projects, you take part in the procession. किसी भी चीज में भाग लेना. So take part in. You need to take part in speeches. Like the take verb can be used in all the forms. I have taken part. I will take part. I am taking part. So the take has take, taken, taking, takes. She takes part in all the activities done at college. So, are you going to take part in anything? Think about it. The next is take to heart. Take to heart. It means बुरा मान लेना. किसी भी बात का आप दिल पे लगा लेना. To be hurt, to be deeply hurt, not only hurt, deeply hurt, or be upset. To be deeply hurt or upset or take anything very seriously. दिल पे लगा लेने वाली कोई बात है, ऐसी कोई बात आपको लग जाती है, मजाक में भी की गई कोई बात आप दिल पे ले लेते हैं, and you feel upset or you feel demotivated, आपको बुरा लगता है और आप अच्छा फील नहीं करते. So take to heart. You must not take everything to heart. सब चीज दिल पे लेने वाली बात नहीं होती है, और या सभी बातें दिल पे लेने वाली नहीं होती है. Let us see the sentence. You were being friendly. तुम मजाक कर रहे थे, तुम एक दोस्ताना अंदाज में उससे बात कर रहे थे. You were trying to be friendly. कभी कभी being friendly लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं कि why somebody is being too friendly. Yeah,
मजाक में किसी ने कुछ कह दिया और आप इसको दिल पे ले लेते हैं. Let us see the sentence. You were being friendly, but she took the joke to heart. लेकिन आपका वो मजाक उसे समझा नहीं और उसने उसी बात को दिल पे ले लिया. To take to heart. Number 15. To take back. कहीं भी बात को आप वापस ले सकते हैं. I am going to take back. To take to heart. To take anything seriously. Take back. तो जब कोई आपकी बात को दिल पे ले लेता है तो आप क्या कहते हैं? ओके ओके, आई विल टेक बैक व्हाट आई सेड. मैं वापस ले लेता हूँ या वापस ले लेती हूँ जो हमने कहा था. अगर आपको बुरा लगा तो मैं उस बात को आई टेक इट बैक. टू एडमिट दैट यू आर रॉन्ग. कभी कभी होता ओके, हमसे गलती अगर हो गई है तो उस बात को हम वापस ले लेते हैं. टू टेक बैक. टू एडमिट. फाइन. ओके. आई एम सॉरी, आई टेक बैक माई वर्ड्स. आई एम सॉरी, आई टेक बैक माई वर्ड्स. हमने जो बात कही थी, जिस बात पे कोई उलझन हो गई थी और कोई परेशानी हो गई थी, उस बात को आप वापस ले लेते हैं. यू टेक बैक योर वर्ड्स. एंड विच इज सच अ नाइस थिंग टू डू. नंबर 16. टू टेक अ रेन चेक. रेन चेक क्या होता है? यू कैन नॉट चेक द रेन, कैन यू? रेन चेक होता है टू डिक्लाइन पोलाइटली. किसी ने आपको इनवाइट किया है, somebody has invited you and you have a टेस्ट कमिंग अप, या कल आपका कोई एग्जाम है या कोई आपकी मीटिंग है या आपका इंटरव्यू लाइंड अप है, देन यू डिक्लाइन पोलाइटली. किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और आप पोलाइटली आप डिक्लाइन कर लेंगे. तो दैट इज टू टेक अ रेन चेक. सो कॉन्वर्सेशंस में बहुत आता है. दे इनवाइटेड मी टू द पार्टी बट आई टुक अ रेन चेक. इट मीन्स आई डिक्लाइंड. मैंने मना कर दिया. टू टेक अ रेन चेक. Take ill. Now let us combine both these. To take a rain check and to take ill. You declined because आप बीमार पड़ गए थे. Take ill, to become sick suddenly. अचानक से आपकी तबीयत खराब हो जाती है. Then you take ill. They took after. They took ill after taking the junk food. Again, take can be used with all the forms. They took ill. वे बीमार पड़ गए. They took ill after eating the junk food. Take into account. Take into account. Now remember, all these words are starting with the verb take. Take into account means to consider. Consider करने वाली कोई बात होती है, ध्यान देने वाली कोई बात होती है. For example, please take into account my late admission. If a student has been admitted very late and there is a terminal exam coming up, तो वो क्या वो एक्सप्लेन कर सकता है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है टीचर को कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि मेरी एडमिशन लेट हुई थी. सो टीचर को आप बोल सकते हैं कि प्लीज प्लीज टेक इनटू अकाउंट माय लेट एडमिशन बिफोर यू गिव द ग्रेड्स. आप मार्क्स देंगे, एक बार जरा सोच लीजिएगा, कंसिडर कर लीजिएगा कि मेरा एडमिशन बहुत लेट हुआ था. टीचर्स कंसिडर. टेक ओवर. Number 18. Take over means to take control. After the manager left, a new person was recruited, and that manager took over the office efficiently. I could have written effectively or efficiently. Took over the office effectively, efficiently. नए मैनेजर ने बहुत अच्छे तरीके से कार्यभार को संभाला. Take over, to take control of. Take over, to take charge. The new manager took over the office efficiently when the old manager resigned. Number 19. To take the trouble. To take the trouble
एक और फ्रेजल वर्ब है, टू गो द एक्स्ट्रा माइल। टू गो द एक्स्ट्रा माइल एंड टू टेक द ट्रबल दोनों सेम है, मतलब जहमत उठाना। टू टेक द ट्रबल, टू डू विथ एन एक्स्ट्रा एफर्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के गेस्ट हैं, आप जाते हैं, तो आप बार बार कहते हैं, आपने क्यों जहमत उठाई, मैं खुद कर लेता। या somebody is trying to help you इन अ ग्रेट वे, बहुत ज्यादा मदद कर रही है, कर रहा है कोई आपको, और उम्मीद से ज्यादा आपको लग रहा है कि ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा कर रहे, इतनी की जरूरत नहीं थी। तो जहमत उठाने वाली बात हो जाती है यहाँ पर। टू टेक द ट्रबल, टू डू विद एन एक्स्ट्रा एफर्ट। किसी के लिए आप बहुत ज्यादा करते हैं, किसी के लिए यू गो दैट एक्स्ट्रा माइल, उतना करने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी आप करते हैं। he took the trouble to he took the trouble of making the guests comfortable। मतलब उसने बहुत मेहनत करी और उसने बहुत जहमत उठाया कि एक एक गेस्ट को वो अच्छी तरीके से होस्ट कर सके। he took the trouble of making the guests comfortable। Number 20, to take to task, खबर लेना। चलो आज बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं, आज सबके रिकॉर्डिंग करके फोरम में चल भेज दिया जाएगा। क्या हुआ? खबर लेना, बच्चों की खबर लेना, जो बदमाश बच्चे हैं, जो बहुत ज्यादा क्लास में कभी कभी हल्ला गुल्ला होता रहता है। when the teacher is not there, you speak so loudly, the noise can be heard in the reception। is that good? No, then you said, ma'am, it was the lunch hour. So what? Should not make so much of noise. This is a classroom, right? To take to task, to take action. So the teachers take action. The teachers take the students to task. Now, look at the sentence. The teachers took the students to task for making a noise. Subject पहले आ जा रहा है. The teachers took the students to task for making a noise. खबर लेना, चलो उसकी खबर ली जाए। वो देर से आता है घर, योर मदर इज ऑफन वेरी एंग्री, सो खबर लेती है आपकी, लेती है कि नहीं? 21, टू टेक ऑफेंस, वही बात है, बुरा मान। टू टेक टू हार्ट, टू टेक ऑफेंस, टू गेट अपसेट और एंग्री। किसी के पीठ पीछे कोई बुराई हो रही है और वो बात अगर उसको पता चल जाती है तो बहुत नाराज हो जाती है, कोई लड़की या कोई लड़का, एनीबडी। इफ यू आर गॉसिपिंग अगेंस्ट समवन, व्हिच इज अ वेरी बैड थिंग टू डू, नेवर डू दैट। अगर कोई किसी के बारे में कोई गॉसिप चल रहा है या कोई ऐसी कोई बात हो रही है, तो कोई अपसेट हो सकता है, और टू गेट वेरी एंग्री। When she heard about the gossip, she took offense। वो बुरा मान गई, उसको बुरा लगा, वो बहुत इतनी नाराज हो गई कि उसने क्या किया, अपने फ्रेंडशिप ही, she broke off the friendship। To take offense, बुरा मान जाना, और to get very angry। She has left the group because she has taken the offense when she heard that people were talking about her character or about just about anything। 21, now this is a quite a common phrase which keeps on popping up in exams, more or less। Take the bull by the horn। अब बुल को हॉर्न से कौन पकड़ता है? काफी डेंजरस है, अगर वो आपको अटैक करता है तो आप कहाँ रहेंगे? बुल को हॉर्न से, उसके सिंग से उसको पकड़ लेना, क्वाइट समथिंग ऑफ ब्रेवरी। यस, टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशन, इट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, प्रिटी डिफिकल्ट। कोई बहुत ही मुश्किल जोखिम भरा जो काम था रहता है, उसको हैंडल करना। अब इट डज नॉट मीन कि यू गो एंड टेक द बुल बाय द हॉर्न, ऐसी बात नहीं है। एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी मुश्किल काम को टेकअप कर लेना, जो काम जो कोई नहीं टेकअप करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, एनी एनी वर्क विच इज वेरी डिफिकल्ट और कोई करना नहीं चाहता है, उसको आप बोलते हैं नहीं, आई हैंडल, आई टेक इट अप। तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन को आप टेकअप कर लेते हैं इन अ वेरी ब्रेव मैनर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत भीड़ है, क्राउड है, लॉट ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट, सब लोग खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो बाहर निकल के चला जाता है,
बगैर fear के कि कुछ हो जाएगा, nothing. He goes out, talks to people and then manages the situation. So to take the bull by the horn का मतलब होता है मुश्किल difficult situations को bravery के साथ solve कर लेना. Let us see the sentence. He decided to take the bull by the horn and organize everything himself. उसने क्या सोचा कि वो खुद ही ये काम कर लेगा, किसी से नहीं हो रहा है, वो खुद ही कर लेगा और सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लेगा. Again the sentence. He decided to take the bull by the horns and organize everything himself. Number 22. Let's move up. To take steps. To take steps का मतलब होता है to begin a course of action. आपने काम शुरू किया कि नहीं? Have you taken steps? Have you started working on something? Have you taken steps for the expression competition coming up? Have I taken steps? Yes, I have taken steps to organize a monthly competition expression, which is going to be an intra-batch, inter-branch competition, which is to be scheduled in a week's time. To take steps, to begin a course of action. Steps have been taken to curb indiscipline. Means steps have been taken to curb indiscipline. Indiscipline को कम करने के लिए, कम करना, curb करना, खत्म करना, मोड़ना. 23. To take pleasure in. To take pleasure in means to enjoy. She takes pleasure in painting. You might take pleasure in making speeches, singing, or whatever. Any activity जिसमें आपको अच्छा लगता है, आप enjoy करते हैं, आपका मन लगता है. So, what do you take pleasure in? Tell me. Number 24. To take one's measure. To check or survey. Check करना, survey करना, decide on करना, देखना क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. First to take measures, right? And then you take steps. The teacher needs to. Let me add on an S over here. The teacher needs to take measures of the weak students. मतलब कमजोर बच्चों को चेक करना है कि क्या कमी है, कैसे उनको सुधारा जाए. तो the teacher needs to take measures how to help weak students. 25. To take sides. किसी एक स्टूडेंट को या किसी एक को डिफेंड करना, किसी एक की तरफ ज्यादा झुकाव होना. Do not take sides when two people are fighting, right? My mother never takes side when we fought. Yeah, never took sides कर देते हैं इसको. Let us correct our grammar. My mother never took sides. This is going to be, there's going to be S over here. When we fought, जब हम झगड़ा करते थे हम लोग, तो मेरी माँ कभी किसी का साइड नहीं लेती थी. सबको डांट पड़ती थी, या जो भी होता था सबके लिए होता था. यानी कि किसी एक को नहीं, तुम्हारी गलती है उसकी गलती नहीं है, ऐसी बात नहीं है. टू टेक साइड्स का मतलब होता है किसी एक को ज्यादा सपोर्ट करना और दूसरे को नहीं करना. The last word today is to take pains. बहुत ज्यादा एग्जाम मत उठाना. डोंट टेक पेन्स. उतना ज्यादा मत करो, ठीक है हो जाएगा. वी लीड समथिंग. फॉर एग्जाम्पल आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं, कोई अ गेस्ट कम्स प्री लेट इन द नाइट, तो क्या कहते हैं, ज्यादा डोंट टेक पेन्स, जो भी है खा लेंगे, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, बट डोंट टेक, जहमत मत उठाइए. टू टेक पेन्स, to do more than what is required. She took pains to prepare food even though the servants were in the kitchen. It means she was so particular कि नहीं मुझे ही बनानी है. She took pains to do
to see that everything is perfect. So she took pains to prepare food, even though the servants were in the kitchen. You can take pains, great pains bhi aap keh sakte hain. She took great pains to perform in the competition. The students who were singing, especially the kavalis and all that, so they took great pains to learn, to perform with their words, their music, the tune. So everything to make everything perfect, they took great pains. वो लोगों ने काफी मेहनत करी थी. So this was the set of verbs with the word take. What you can do is you can write your own sentences. The example sentences already are given. What you can do is make your own sentences and see yourself improving by leaps and bounds. मतलब धीरे धीरे आप अपने आप देखेंगे कि आप improve हो जाएंगे. You're going to improve definitely. And number 2, these words, these phrases will be popping up in your exams. Your verbal ability, you cannot do without vocabulary, right? So we'll get back again in some very informative video to help you learn, to help you improve. Now, this is the only motto of teachers. They make videos for you to improve, right? So stay tuned and happy learning.